A very good morning to one and all, class 11. Welcome to your TSN English class. Today we'll study a new topic, that is tenses. And I know that you have read this topic so many times in your previous classes, but still, this is in your course this year in term 1. So we'll study this topic here. So your tenses, verb tenses are tools that are used to express time. So what are tenses, students? These are some kind of a verb tenses, so which used to express time, and they refer to the time of an action and tell the time. So with the help of this refer time of an action. That means when this action happens कि work या action कब हुआ है, tell the time, इनसे हमें time पता चलता है, and state of an action. That means हमें टाइम कब हुआ है, कैसे, किस टाइम पे क्या वर्क हुआ है, दिस we'll get to know about the with the help of these tenses. So we have three kinds of tenses here, or the classification here is on the basis of three time. So the first one is present tense, the second one is past tense, and the third one is future time. So here these tenses refer to the time of action. So past, present और future, ये किस basis पे इन्होंने यहाँ classify किया है? Time of action and tell the time and state of action, कि time किस टाइम पे एक्शन हो रहा है, या क्या टाइम हमें पता लग रहा है, या फिर स्टेट ऑफ एक्शन क्या है. Looking for an easy way to learn English grammar, then you are in right place. So we'll provide you some tenses, verbs, noun, topic, like etc. So let's move on to next page. So here, tense is defined as the form of verb that give the relation between time and action. So what is tense, student? It is a form of verb. Verb की एक form है, यानी क्रिया. What is verb? Verb की एक form है tense. Tense is what? काल. Give the relation between time and action. जो हमें time और action दोनों के बीच का relation समझाता है. Time is the duration of work and action is the work done. टाइम से हमें क्या मतलब है यहाँ पे? ड्यूरेशन ऑफ वर्क, यानी वो वर्क कब हुआ था, कितनी देर के लिए हुआ था और कैसे हुआ था. एक्शन इज डन, एक्शन इज द वर्क डन. टाइम, किस टाइम पे हुआ था वर्क वो तो ठीक है, बट कौन से एक्शन, मतलब दैट मीन्स एक्शन इज द वर्ब. सो हियर इट डिफाइंस द वर्ब. टेंस गिव द टाइम व्हेन एक्शन इज डन. सो इसकी मदद से हमें टेंस गिव द टाइम व्हेन एक्शन इज डन. टेंस हमें बताते हैं कि एक्शन कब हुआ है प्रॉपरली. सो देयर आर थ्री फेजेस ऑफ टाइम. सो स्टूडेंट, कितने फेज हैं हमारे पास टाइम के? थ्री फेजेस ऑफ टाइम वी हैव. द फर्स्ट वन इज टाइम प्रेजेंट, दैट मीन्स नाउ. सो प्रेजेंट टेंस हमें क्या समझाता है? दैट वॉट एवर एक्शन इज परफॉर्म्ड नाउ. टाइम पास्ट हमें पास्ट, जो चीज़ें पास्ट यानी कि जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है. नेक्स्ट वन इज टाइम फ्यूचर. दिस एक्सप्लेन अस व्हाट थिंग्स और व्हाट इज येट टू कम, कि क्या आने वाला है. So let's consider the sentences given below. Here, Hari eats a mango. Hari mango खा रहा है. So ये action present में हो रहा है. Hari ate a mango. Hari mango खा चुका है. Next one, Hari will eat a mango. Hari mango खाएगा. So with the help of these sentences, I'm sure students that you can, or we can observe that each sentence given above has a different meaning here, and the reason is in each sentence
हैज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसीलिए इससे आपको यही पता चल रहा है कि हर सेंटेंस में डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी है. द रीजन दैट ईच सेंटेंस हैज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, सो दीज डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड टेंसेस, और ये ही अलग अलग प्रकार के फॉर्म ऑफ वर्ब को हम टेंस कहते हैं. द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. सो टेंस की मदद से हमें पता चलता है कि टाइम ऑफ एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग कब हुआ है. क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस विथ एग्जाम्पल एंड देयर स्ट्रक्चर. तो टेंस का क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल के साथ और उनके स्ट्रक्चर के साथ. सो देर आर थ्री टेंसेस. द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट tense, past tense and future tense. Each has four form. हर tense के four forms होते हैं. Study the chart given below to understand more about all tenses and their form. कुछ एक charts आपको मिलेंगे जिनसे आपको बहुत easy हो जाएगा how to learn these. So each tense has four form. Study the chart given below. So your classification of tense with three diagrams, students. So by this you can easily understand this one here, classification of tenses with three diagrams. So here present tense is classified into four, that is present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Similarly, past tense is also classified in the four, like past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Your future tense is future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. So by this you can easily recognize that the tenses are like. So अगर हम ऐसे बात करें तो basically we have three types of tenses, that is present, past and future, and after that we'll subclassify those tenses, and each part is having or subclassified into four parts. According to that we have how many kinds of tenses? 12. 4, 4, 4. So let's read the first one today here. Present tense. So student, what is present tense? Present indefinite tense, also called simple present tense. Present indefinite tense का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं simple present tense. Here अब हम इसमें क्या यूज करेंगे? Subject plus the infinitive without to plus when the subject is third person singular s or es added to the first form of verb. So you have read this so many times that present tense में हमको क्या यूज करना होता है? सब्जेक्ट के साथ हम इन्फिनेटिव्स यूज करते हैं, दैट इज विदाउट टू, and when the subject is third person singular s or es added to the first form of verb. So इधर subject अगर singular है, plural है, तो आपको क्या यूज करना है? s, es, और first form of verb के साथ आपको es यूज करना है. So present tense, present indefinite tense या simple present tense में I learn my lesson daily. We love our parents. You read Hindu daily. A cow lives on grass. He or she helps the poor. They reach the school in time. So sentences, you can see here there are different kind of sentences, that I learn my lesson daily. We love our parents. So अब आप देखें यहाँ पर कि we love our parents. So when the subject is third person singular, s or es is added to the first form of verb. अगर subject third person singular है तो हम verb के साथ s और es add करेंगे, वो भी first form of verb के साथ. अब यहाँ पर क्या है? सेकेंड सेंटेंस अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो we love our parents, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर
एस और ई एस यूज हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, दैट इज पेरेंट को इन्होंने बना दिया है पेरेंट्स. अ काउ लिव्स ऑन ग्रास. थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसीलिए इस सेंटेंस में भी अ काउ लिव्स ऑन ग्रास. And rest of the sentences are like subject plus infinitive. They reach the school in time. But हमें particular timing नहीं दिया हुआ है. I learn my lesson daily. Lesson तो daily learn करता है, but कौन से subject का और कितने करता है ये यहाँ पे mention नहीं है exactly. सो यू रीड द हिंदू डेली. आप हिंदू डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कितने पेजेस पढ़ते हैं ये मेंशन नहीं है, और कब पढ़ते हैं ये भी मेंशन नहीं है, सिर्फ डेली मेंशन हुआ है. सो लेट्स रीड सम स्पेलिंग रूल हियर. Add es to the first form of verb if and ch, sure, or x as teaches, rushes, goes, passes or fixes. क्या रूल है? फर्स्ट रूल है आपको ईएस कौन से फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है. ऐसा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि एंड होता है सी एच साउंड से, या फिर एस एच से, या फिर ओ से और एक्स से, जैसे कि टीचर्स, रशेस, गोज, passes और fixes. Here जो फर्स्ट फॉर्म है वो किससे एंड हो रही है? सी एच, एस एच और एक्स से और ओ से. दैट इज वाई यहाँ पे ऐड करा है ई एस, लाइक टीच. टीच में आपको सी एच, आप जो है लेटर अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं सी एच आप वो लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर टीच में ई एस लगा दिया है. रश एस एच का साउंड आ रहा है तो ई एस लगेगा. गो ओ का साउंड है या ओ आ रहा है तो हम ई एस लगाएंगे. पासिस एस है इसीलिए हम यहाँ पर ई एस लगा दिया है. फिक्स एक्स है इसीलिए हमने यहाँ पर ई एस लगाया है. If a verb end in y, there is a consonant before y. Change y into I and add es to the verb as. So, हमें आगे नेक्स्ट स्पेलिंग रूल में क्या बताया है? If a verb end in y, अगर कोई वर्ब y से एंड होता है, जैसे कि cry. क्राई ये एक वर्ब है, रोना. वर्ब यानी क्रिया है, और इस रोना शब्द जो है ये क्राई जो है ये वाई से एंड हो रहा है. फ्लाई, ट्राई, ये जो वर्ड्स हैं ये किससे एंड हो रहे हैं स्टूडेंट्स? वाई वर्ड से. तो जो वाई से एंड होते हैं, सो देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, चेंज इनटू वाई इनटू आई एंड एड ई एस टू द वर्ब. सो यहाँ क्या है? देयर इज अ कॉन्सोनेंट वाई बिफोर वाई. वाई कहाँ है? एंड में. एंड चेंज वाई इनटू आई, तो हम वाई को किस में चेंज कर रहे हैं? आई में. एड ई एस टू द वर्ब. इस तरह जब हम वाई को वर्ब में बदलते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? सी आर आई ई एस, क्राइज, फ्लाइज, ट्राइज. एक्सेप्शन if there is vowel before y, add only s. तो अभी ऊपर वाले क्या थे? क्राई, फ्लाई और ट्राई, ये तीनों ही वर्ब्स हैं, क्रिया हैं. लेकिन नेक्स्ट में आपको एक्सेप्शन समझा रहा है. इफ देर इज वॉवल बिफोर वाई, अगर वॉवल हो वाई के पहले, एड एस. इधर वाई से पहले क्या था? कॉन्सोनेंट है सी आर वाई. सो क्राई, फ्लाई, तो वाई से पहले आर है, फ्लाई से पहले एल है और ट्राई से पहले भी आर है. इनके पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ई एस जो है वो हमने यहाँ लगाया है. लेकिन अगर वाई से पहले आपके पास वॉवल हो, जैसे कि इंजॉय, देखिए आप वाई से पहले ओ लगा हुआ है वर्ड में. ओबे, ओबे वर्ड में वाई से पहले ई वॉवल लगा हुआ है. प्रे, प्रे में आपके पास वाई से पहले
ए लगा हुआ है। अगर आप पी आर ई वाई प्रे वाला भी लेते तो भी उसमें ई लगा हुआ था, या दैट मीन्स अगर हमारे वाई वाले वर्ड्स में वाई से पहले वॉवल लगा हुआ है देन हम उसमें एस लगाएंगे, और अगर वाई से पहले वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हम उसमें ई एस लगाएंगे. सो टू ऑल वर्ब्स add only s as sits, plays, rims, speaks. Okay? Now move on to interrogative sentences. So what are interrogative sentences? These sentences, which are question based sentences, basically form do does plus subject plus the infinitive without to plus dash. Form do does plus subject plus infinitive without to plus dash. That means question mark. When the subject is third person singular, we use does. अगर subject third person singular है तो students हमें क्या use करना है? does. For other subjects we use do. अगर third person singular नहीं है तो दूसरों के लिए हम क्या use करेंगे? do. I के साथ do, you के साथ भी आपको क्या यूज करना है? do. So, do you learn lesson daily? Does he help the poor? अब इसमें does क्यों लगा है? Because ये third person singular है. Does he help the poor? तो he. Next, does she know me? Next, why does the girl cry? तो the girl है यानी singular है, तो why does, इसीलिए does लगा है. अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि आप कह सकते हैं ऐसे सेंटेंस जो आपको क्या बता रहे हैं? नकारात्मकता. सो फॉर्म सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस द इन्फिनेटिव. इधर आपको यूज करना है डज नॉट इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. दैट मीन्स डज तो सिंगुलर ही होगा, लेकिन आपको कब यूज करना है? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब. With other subject use do not, like she does not hate anyone, they do not welcome us. Here are some exceptions are there, students. Never is followed by bare infinitive or infinitive, that is why s or es as statement. So the negative sense is conveyed by never itself. I never tease animals. She never tells a lie. तो आपको एक एक्सेप्शन इसका भी बता दिया है कि नेगेटिव सेंटेंस में अगर नेवर हो तो आपको किस तरह यूज करना है. सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे अब हम आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस? यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाए और नेगेटिविटी या नकारात्मकता भी हो. डू नॉट, डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस द इन्फिनेटिव. Don't you like this new film? Of does not she help the poor with money? So why she के साथ does not? Because third person singular. You के साथ do लगेगा ही, I के साथ भी do है, plus subject है यहाँ पर, then the infinitive. Next one, examples. Don't you like this new film? Does she help the poor with money? E. Emphatic use of do or does. So emphatic use कब होता है do or does का? Subject plus do does plus the infinitive. Examples: she does drink but not in public. I do go to gym but only on Sundays. So कुछ ऐसे emphatic sentence हैं जिसमें do does use होता है, subject पहले use होता है. So she does drink, इसलिए सब्जेक्ट पहले आ गया है, but not in public. I do go to gym but not on Sunday. So here important note for this simple present tenses: use only first form of verb after do and does. First form of verb use करनी है do and does के बाद. Adverbs जो simple present tense is used with the words, जो adverb simple present tense में words के साथ use होते हैं वो कौन से हैं? Always,
often, frequently, generally, usually, sometimes, every day, every week, every month, daily, once a week, twice a week, etc. So, here the use of simple present tenses that we have learned this. So, to express the habitual action and this part we'll learn in our next video. Till then, stay safe. Thank you all.